Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. And I really hope कि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा और नोटिफिकेशन बेल को तो ऑन कर ही दिया होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक काम छूटा है या दोनों ही काम आपने नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ डू इट नाउ। और आज इस चैनल पर मैं आपके लिए एक रोमांटिक बुक का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है अ हाफ बेक्ड लव स्टोरी बाय अनुराग गर्ग एंड गुंजन नारंग. A half-baked love story is a story of two lovers, Anamika and Arav, and they first meet when they are just school kids. I mean, they were studying in a school in Delhi, and first they met, and for Arav, it was love at first sight. एंड दोनों का प्यार जो है जो स्कूल टाइम से शुरू होता है वो किस तरह से इस टीनेज वाले प्यार से डील करते हैं, घर वालों से छुपा कर डेट करते हैं, दुनिया से छुपा कर डेट करने की कोशिश करते हैं और दोनों का प्यार जो है और गहरा होता जाता है दिन ब दिन. बट जस्ट लाइक ऑल टीनेज लव स्टोरीज देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. Arav and Anamika are both caught red-handed by Anamika's father one day, and he suffers a heart attack and he's rushed to the hospital. And because of all the circumstances around them, their families also, they start fighting, they start arguments. Basically, they get into a scuffle. And because of that, Anamika actually gets very irritated with Arav, and she, asks Arav to leave her and her family alone. एंड ऑफ कोर्स आरव इज़ हार्ट ब्रोकन. दोनों का जो है ब्रेकअप हो जाता है और किस तरह से वो एक ही स्कूल में रह के एक ही फ्रेंड सर्कल का पार्ट होकर भी इस ब्रेकअप से डील करते हैं. किस तरह से वो दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे को देख के भी अनदेखा करने की, जो कि दोनों के लिए बहुत मुश्किल और दोनों के लिए बहुत पेनफुल है. बट ऑफ कोर्स सबको ऐसा लगता है देख कर कि आरव को बहुत मुश्किल हो रही है मूव ऑन करने में और शायद अनामिका मूव ऑन कर चुकी है. Now we all know that the school love, school crush or a school breakup, basically teenage romance, is too hard to forget. Most of the time it is the first love of your life and the first breakup of your life. So it's very difficult for you to come out of it because anyway during your school days and your teenage years you're dealing with a lot of emotions, a lot of uncontrollable hormone levels, and then you have to manage this breakup along with your studies and also manage your parents. And of course, Arav and Anamika are both trying to do that. लेकिन अनामिका जो है सबको पता है कि जो क्लास की टॉपर होती है, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट, एंड शी ऑलवेज टॉप्स द क्लास. बट वन डे आरव गेट्स टू नो दैट शी हैज़ एक्चुअली अप्लाइड फॉर अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एंड शी इज़ लीविंग द स्कूल. उनके पेरेंट्स जो हैं दिल्ली, जो उन्हें लगता है कि अनामिका के लिए ये ठीक शहर नहीं है बिकॉज ऑफ आरव, तो वो जो है उन्हें उनके होम टाउन कलकत्ता ले जा रहे होते हैं. एंड आरव इज़ नाउ कम्प्लीटली shattered बिकॉज उनको लगता है कि कम से कम वो स्कूल में अनामिका को देख तो पाते थे, लेकिन अब वो अनामिका को देख भी नहीं पाएंगे. और वो और भी ज़्यादा टूट जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इसमें अनामिका की मर्जी शामिल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है उनके साथ. Time passes and after some time Arav is finally almost trying to get out of his sad state of mind, and now he's trying to concentrate on his studies. He's meeting his friends now, and he's just trying to cope up with his studies. But suddenly he gets a call from a common friend who tells Arav that she met Anamika in Kolkata and also tells her that Anamika is getting married. तो वो उनसे ये भी बताती हैं आरव को कि अनामिका जो है वो भी उन्हें उतना ही ज़्यादा मिस करती हैं जितना कि आरव अनामिका को मिस करते हैं. और अनामिका जो है क्योंकि शादी हो रही है उनकी, तो शादी से पहले आखिरी बार वो आरव से मिलना चाहती हैं. Arav immediately packs his bags and leaves for Kolkata, and with the help of his best friend, and he reaches Kolkata. He meets Anamika after a long gap, and their obviously hug and their first time their union is
very emotional. That moment is very emotional for both of them. And now Anamika shares her part of the story with Arav कि क्यों उन्होंने शहर छोड़ा था, क्यों वो शादी कर रही हैं. तो वो उनसे बताती हैं कि क्योंकि उनके पापा को जो हार्ट अटैक हुआ था वो काफ़ी फेटल हार्ट अटैक था, और उनसे कहा गया है कि अगर उन्हें एक और झटका लगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. एंड अनामिका didn't want to lose her father, and that's why she said yes to both leaving the city as well as getting married. Arav's friends arrange for one last meeting of Arav and Anamika, where Anamika is dressed as a bride and she's about to get married, and they both of course hug and they really cry for hours. And after that Anamika hands him a letter, and she asks Arav to open it only when he's on the train and he's leaving Kolkata for Delhi. और आरव जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह से अनामिका भी उनसे उतना ही प्यार करती थी शुरू से, स्कूल के टाइम से, जितना कि आरव अनामिका से करते थे. एंड शी सेज दैट शी रियली लव्स हिम, एंड शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट if he really loved her then she would, and if he wants her to be happy then he has to move on in life. बट क्या आरव एक्चुअली मूव ऑन कर पाएंगे? क्या अनामिका किसी और से शादी कर पाएंगी? क्या आरव और अनामिका एक दूसरे को भूल पाएंगे? फॉर दिस यू नीड टू रीड द बुक. ये सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे, जिसका नाम है अ हाफ बेक्ड लव स्टोरी बाय अनुराग गर्ग एंड गुंजन नारंग. So now my take on this book is that it's a good read for maybe college goers, school goers, school and college kids and teenagers. But for me personally, I found the story very filmy, over the top, and I didn't quite like this book in the sense that this is not my kind of love story. And एक ट्विस्ट है कहानी में डाला हुआ जो कि बॉलीवुड भी नहीं, टीवी सीरियलिश टाइप है. मतलब कि जैसे कभी कभी टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि कहानी का कोई एक कैरेक्टर जो होता है वो सपना देखता है और वो सपना इतना लंबा चलता है, उसमें एक ट्विस्ट भी आ जाता है और बाद में व्यूअर्स को पता चलता है कि वो मतलब सच्चाई नहीं थी, वो तो एक सपना था. तो वैसा ही एक अननेसेसरी और बहुत ही स्टूपिड ट्विस्ट इस कहानी में भी है, जो मुझे लगता है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. आई हैव रेड अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज़ ऑफ दिस बुक ऑनलाइन. देर आर पीपल हु एब्सोल्युटली लव दिस बुक एंड देर आर पीपल हु एब्सोल्युटली हेट दिस बुक. एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई कैन अंडरस्टैंड वाई. Because there are a lot of good things about this book. Like for example, the teenage issues are discussed in a very good way. Like for example, there's a lot of clarity because it's been written keeping a teenager in mind, because it's a teenager's love story. So what they go through, the emotions they go through, the problems they go through, these things are explained very beautifully in the book. But then the language and also the poor narration just kills the story. So मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक डाई हार्ड रोमांटिक है ना, या आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, टीनेजर हैं, then maybe you should give this book a try, because there are a lot of things in the book that a teenager might relate to and might understand. And also if you're not a teenager, maybe you can give it a try, because book काफ़ी पतली है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको. And also maybe the other reason to read this book is that this is supposed to be a national bestseller. So I hope you liked the full review of this half-baked love story, and if you like this review, then please make sure you share it with all the book lovers you know, and also with all your friends and family members. And मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ. Till then, please keep reading and please keep smiling.